हाय एवरीवन, दिस इज अश्मिता फ्रॉम सौरभ's क्लासेस एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैक्स टू मैक्स। ये क्वेश्चंस है फ्रॉम द सिविल सर्विसेज ऑफ दिस ईयर, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑफ दिस ईयर एंड हम लोग यहाँ पे एक्चुअली डिस्कस करेंगे थोड़े से डिटेल्स में, सो दैट इज व्हाई आई हैव पिक्ड अप ओनली अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। तो इसी तरह से हम लोग और भी वीडियोस के हेल्प से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड इसके अलावा अगर आप कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन ले रहे हैं देन यू कैन ज्वाइन आवर क्लासेस, या फिर अगर आप कोई मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल्स चाहते हैं, सो फॉर दैट यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आवर क्लासेस। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पे सभी डिटेल्स दिया गया है। आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो, या फिर आप लोग अगर एनरोल करना चाहते हैं हमारे साथ। अगर आप लोग डाउट क्लियरिंग सेशंस चाहते हैं या फिर कोई भी इंटरेक्टिव सेशंस चाहते हैं देन डेफिनेटली डू जॉइन आवर क्लासेस थ्रू द लिंक। एंड एनरोल करने के लिए आप वेबसाइट से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। दैट्स इट। कमिंग टू द क्वेश्चंस डिस्कशन नाउ। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22 से स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हम लोग सभी स्टेटमेंट्स को पहले रीड करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, देन हम लोग कंसिडर करेंगे कौन से आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पे वो देखिए आंसर कैसे लिखा हुआ है, देखिए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो इस तरह के कुछ आंसर दिए गए हैं, हमें करेक्ट आंसर चूज करने हैं। तो चलिए स्टेटमेंट्स को एक बार देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 से स्टार्ट करते हैं। इन पोस्ट पैंडेमिक रीसेंट पास्ट many central banks worldwide had carried out interest rate hikes. तो इंटरेस्ट रेट्स का कुछ हाइक हुआ है ऐसे बताया जा रहा है स्टेटमेंट 1 में। तो पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में क्या हुआ, many central banks around the world have actually pursued accommodative monetary policies, including reducing the interest rates or keeping them at historically lower levels. And the aim has been to stimulate the economic recovery and also to counter the negative impacts of the pandemic on the economy. Interest rates hikes have been relatively rare during this period. तो इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 में जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो रॉन्ग है। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। सेंट्रल बैंक्स जनरली assume that they have the ability to counteract the rising consumer prices via the monetary policy means. जी हाँ, बिल्कुल ये एक करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, बी करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि central banks typically have the mandate and the tools to control the inflation and stabilize the prices. Okay, stabilize all the monetary policy measures. So they can definitely, they have the ability to adjust the interest rates, या फिर they can implement the open market operations, they can regulate the money supply to manage the inflationary pressures in the economy. So based on this analysis, we can say the second one is correct, and the correct option according to this is so the first statement is incorrect definitely, and second one is correct. So इस तरह का क्या कोई statement है? Yes, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So चलिए D को as our perfect answer choose करते हैं. Next question. Consider the following statements. Statement 1 बता रहा है carbon markets are likely to be one of the most widespread tools in the fight against climate change. Okay, carbon markets. ये स्टेटमेंट करेक्ट है, मैं यहाँ पे टिक दे रही हूँ, ये करेक्ट है क्योंकि कार्बन मार्केट्स को हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं एमिशंस ट्रेडिंग और कैप एंड ट्रेड सिस्टम्स, and these are considered effective mechanisms to like mitigate the climate change, and they also provide economic incentives for reducing the greenhouse gas emissions by putting a price on the carbon, and carbon markets allow the trading of the emission permits, creating a market based approach to encourage the emission reductions. सेकेंड स्टेटमेंट में आते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है, हमने पढ़ा ना सेकेंड स्टेटमेंट, सेंट्रल बैंक्स जनरली assume that they have, okay sorry I went back to that question. Statement 2,
Carbon markets transfer resources from the private sector to the state. Okay, so statement 2 कह रहा है carbon markets ट्रांसफर करते हैं resources from the private sector to the government sector. Okay, तो क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है. Carbon markets do not necessarily transfer the resources from the private sector to the state. Instead, what they do, they create a market where the private entities can buy and sell the emission permits. So this is a mechanism that promotes the emission reductions while allowing flexibility to the business, allowing flexibility for the businesses to find the most cost-effective ways to reduce to reduce their emissions. Okay. So based on this discussion, we might say that statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. So is this matching with any of the statements? Yes, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. So it's coming to C. Okay, so that's it. Let's move over to the next question. It says, which one of the following activities of the Reserve Bank of India is considered to be part of sterilization? जो भी ऑप्शंस दिया गया है उसको पहले देख लेते हैं क्या ऑप्शंस है. कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बी कह रहा है ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम्स, सी कह रहा है डेट एंड कैश मैनेजमेंट फॉर द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड डी कह रहा है रेगुलेटिंग द फंक्शंस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस आखिर में क्या है? जो पहले ऑप्शन में दिया गया है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं. Open market operations actually refers to the buying or okay, पहले हमारे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो यही होगा, open market operations. Okay, the activity of the Reserve Bank of India that is considered to be part of the sterilization is conducting the open market operations. तो open market operations क्या है? Open market operations refer to the buying or selling of government securities or selling of bonds by the central bank. That is, in this case हम कह सकते हैं हमारे इंडिया में Reserve Bank of India है to control the money supply in the economy. So when the central bank wants to reduce the money supply, it sells the government securities, which takes the money out of circulation, of course. And conversely, when it wants to increase the money supply, it buys the government securities, injecting the money into the economy. Okay, तो ये है पूरा open market operations का concept. Next, sterilization के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि sterilization आखिर में है क्या. Sterilization एक process है which is used by the central banks to offset the impact of their intervention in the foreign exchange market on the domestic money supply. तो इसके अंदर ये involve करते हैं buying or selling of the domestic securities such as government bonds to neutralize the effects of foreign exchange transactions. And ये help करता है to maintain stability in the domestic money markets. Okay. So therefore हम कह सकते हैं कि conducting open market operations can definitely help us in the process of sterilization. ठीक है, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही, क्योंकि हम लोग कोई कुछ हैंडफुल ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं हर एक वीडियो में. तो अगर आप हमारे यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमने पहले भी बता दिए हैं कि नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी डिटेल्स दिया गया है, वेबसाइट लिंक या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रेपरेशन ले रहे हो तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यहाँ पे. To follow our channel for the interactive sessions and solutions, and इसके अलावा live lectures के लिए आप join कीजिए. That's what we are going to do for today's class. We are next going to meet again in the next classes. जो भी next questions रहेगा हम लोग वहाँ पे ही solve करेंगे. तो let's meet once again in the next classes.